ये गाड़ी रुकी एंड दे काइंड ऑफ हेल्प्ड मी आउट. फिर मुझे पुलिस की डाले में आगे डाला. देयर वाज अ पुलिस वाला. आई हैव अ विजन कि वो एक ड्राइव कर रहे हैं. सम पुलिस गाय. Asfar was at the back with more police people, and I was just howling, and I was falling because I couldn't breathe. और मैं उनको बस यही कह रही थी कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही. अब मुझे I felt like heart attack है. और वो जो पुलिस वाले थे बस वो मुझे कह रहे थे कि आप बस कलमा पढ़ें, कलमा पढ़ें. अब वो कह रहे हैं कलमा पढ़ें और मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ, तो वो कह रहे हैं कलमा पढ़ ले. I'm like मैं भी वही सोच रही हूँ, ठीक है कलमा पढ़े. Oh my God, अच्छा बस कलमा ही पढ़ना है. कलमा ही पढ़ना है. कलमा ही पढ़ा बहुत देर के लिए, कलमा ही पढ़ते रहे. And that it gave me so much strength. फिर eventually I got to कोई dispensary पे मुझे लेके गए, फिर कोई बस बहुत कुछ हुआ. And I'm also thinking, look how poor our emergency services are. There was nothing. There was nothing. There was no ambulance. On a highway that has experienced similar accidents. Nothing. Oh, wow. एक dispensary में गए जामशोरों में जहाँ पे कुछ नहीं था. They didn't even have painkillers. They had no medication. Amazing. तो एक डॉक्टर आए कोई यंग सा कोई किसी गांव से, उनको पता चला कि खूबसूरत जो है राइट वो आई हुई है डिस्पेंसरी में, क्योंकि ये बात फैलनी शुरू हो गई. पीपल कुड सी माई फेस. सो आई वॉज ब्रॉट इन टू दिस प्लेस एंड बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं मुझे. तो एक डॉक्टर 1 घंटे बाद कहीं से आया, यंग डॉक्टर, और उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी एल्बो भी टूट गई है, क्योंकि यहाँ सारा कुछ बहुत पेन था. सो ही पुट मी इन अ कास्ट. यहाँ पे पूरे बाजू को कास्ट में डाल. Isn't that like the worst thing to do? It was the worst thing. Yeah. Because even I know that and I have absolutely no medical experience. मुझे प्लास्टर की कास्ट में डाल दिया. तो अब मैं कास्ट में हूँ. And we're waiting for an ambulance to take me back to Karachi. There was no ambulance. There were no phone signals. And I remember किसी ना किसी तरह असफर ने किसी का फ़ोन लेके, किसी एक पुलिस वाले के पास कोई ऐसा नंबर था जिस पर सिग्नल आ रहे थे, तो कोई चीपा की एम्बुलेंस आई या पता नहीं कोई वैन आई. एम्बुलेंस भी नहीं थी. एंड इट केम आफ्टर 3 hours. अब 3 घंटे में वहाँ हूँ विद नो पेन किलर्स, नथिंग. And then it took us 4 hours to get to Karachi. Back to Karachi. South City पहुंची. अब मैंने हॉस्पिटल का नाम ले लिया. ठीक है. उन्होंने मदद की. So then I was there. अच्छा, जो orthopedic surgeons जिन्होंने मुझे चेक किया, 2-3 opinions ली. And डॉक्टर शाह, डॉक्टर इमरान शाह, जिन्होंने अब मेरी सर्जरी की है, उनके पास उनका सिर्फ मैं नाम लूँगी, बाकी सर्जन्स का नहीं लूँगी. सो 2-3 ओपिनियंस ली. दूसरे तीसरे दिन एक्सरेज हुए, पता चला कि कहाँ कहाँ से इंजरीज हैं. सो यू नो मोस्ट कॉलरबोन्स हील ऑन देयर ओन, राइट, एंड मोस्ट स्कैपुला की इंजरीज हील ऑन देयर ओन. तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, वेट करते हैं कि ये नेचुरली हील हो जाए. वील पुट यू. पहले तो उन्होंने वो कास्ट तोड़ी. हाई जब वो प्लास्टर तोड़ रहे थे तो इतना पेन हुआ बिकॉज सारी हड्डियाँ अंदर टूटी हुई हैं. सो दे हैड टू ब्रेक द प्लास्टर. And I remember Maria was there and some other friends were there. I was with somebody in a relationship with someone at that time. He was there and I was just holding their hands and screaming because no painkiller was working. I mean, yeah, after 7 hours of impact. So, I was in a cast, in a sling for a few months. लेकिन तीसरे दिन I went to get Dr. Shah's opinion. When he saw the x-rays, he said कि ये तो हड्डी नहीं जुड़ेगी कभी, आपको सर्जरी करानी है. अच्छा. ये नेचुरली नहीं जुड़ेगी. Okay. तो I was like really? He's like हाँ आप लिख लें, ये कभी नहीं जुड़ेगी, गैप बहुत ज़्यादा है. Okay. So I went back to the other surgeons. My mother was in Lahore. Because you were avoiding the surgery. Yeah, my mother was like नहीं कराओ surgery. She was very sick. She couldn't travel to Karachi at that time. Right. So मैंने नहीं कराई surgery उस वक्त. मैंने कहा शायद miraculously I am protected. You know, मेरी जान बच गई, शायद मेरी हड्डी भी जुड़ जाएगी. हड्डी भी खुद ही जुड़ जाएगी. नहीं जुड़ी. Yeah. Because they put me in the wrong sling. Yeah. So negligence. There are 2-3 different kinds of slings that you can be in. Anyways, मैंने बहुत बोल दिया है सबके बारे में.
I'm sure everybody wants to hear the story. Yeah. हाँ, you know, the takeaways from this is पहला takeaway ये कि you have to listen to your gut. my gut said एक तो आप अपने ड्राइवर के साथ जाएं. जी. दूसरी दफा my gut said कि ये जो sling मुझे लगा रहे हैं आप, shoulder sling, उससे gap और बढ़ जाएगा. Okay. I said मुझे figure 8 brace लगा के दें, जिससे bones करीब होती हैं और जुड़ जाएंगी. So the orthopedic surgeon at another hospital and a really big name, he said, नहीं अब नहीं वो कोई लगाता. जबकि when I did research years later, that is the sling I should have had. Right. और 2 हफ्ते के अंदर मेरी bone जुड़ जाती. Fresh break होती है ना. 72 hours में bones को touch करके calcify होना होता है. Look at you, you've done all your research. My Dr. You're Shah like, says, you're now you Dr. can start Ayesha working Omar. with me now. You are, तुम एक You are a orthopedic bona fide, बन चुकी you are a हो. bona fide orthopedic surgeon, absolutely. So then I waited and I waited. 6 months गुजरे and नहीं जुड़ी हड्डी. And I went back to Dr. Shah and he said, मैंने तो तुम्हें बोला था. And the other surgeons also said कि अच्छा अब आप सर्जरी करा लें. तो मैंने कहा कि यार अब मैं 3 महीने घर बैठ के निकली हूँ. So I said अच्छा सोचते हैं. वो सोचती रही. I went back to life. I started working. And very few people knew that my bone was still broken. I used to speak about it. So my bone was broken, my scapula was out of place, my scapula was injured from places, and I kept working like that. Was that good or bad? Of course it was bad because there were alignment issues. I used to go to the gym. Funnily enough, and fortunately, I looked very fit. You know, last 8 years. Absolutely. In fact, I think the last 3 years, my body looked the fittest it had ever looked. You know, because I was eating right, which brings us to diet. I'm delighted to have partnered with CaC-1000 Plus for AHI Inner Star. It's a brand that I trust personally. I've been using it for years for energy, bone strength, and vitality. The really cool thing is that it comes in several great flavors, orange and mango being my absolute favorite, also because mango comes in a sugar-free option. We all need calcium for core strength. And the great thing about CaC-1000 Plus is that it is affordable and accessible for everyone. Which brings us to diet, absolutely. And I want to know that, of course, because you were eating right, therefore your body ne saath nahi choda. It was prepared, you know, to deal with trauma. I couldn't work out as much as other people. Right. Work out, मैं push-ups नहीं कर सकती थी, मैं burpees नहीं कर सकती थी, मैं ऊपर weights नहीं कर. The many things I couldn't do. Right. But I knew what I could do. Whatever you could do, you did. So I kept on doing it, and I kept on eating healthy. Ajay, now what role because this is such a big experience in your life, a big time. What role did nutrition and what kind of nutrition helped you heal? Well, see, 8 years later, something happened to me in January 2024. Today. This year. Yeah. I started working on my trauma healing, my emotional and my mental health 2-3 years ago. Right. Many different things happened. बहुत कुछ हुआ. मतलब the worst. Maybe not the worst. I mean, of course, I'm blessed कि मुझे life-threatening diseases नहीं हुए. But many things happened to me. तो बहुत सारा trauma इकट्ठा हो गया. And I realized कि अब ज़रूरी है कि it's time to take a look at what's happening inside. Would you share, give us a glimpse of what kind of traumas? Because I'm sure women are going through them as well. You know, Aamna, I was sexually harassed very early on in my career. Yeah. In fact, the first time I was molested, I was 3 years old. I've spoken about this. 3 साल की थी और एक neighbor के कोई cook था या cook का बेटा था, teenager था या कुछ young ही था but बहुत बड़ा ही था मुझसे. That was the first instance. Then many other instances. Then harassment in college, on the streets. Thi, catcalling, किसी ने हाथ लगा दिया, which we take very lightly, but that was all a part of trauma build up. Trauma build up. Financial stress, pressures. You know, I was a very high functioning and I wanted to perform. I wanted to be the best. I wanted to just make everyone happy. तो वो भी stress में लेती थी अपने ऊपर.
then I also wanted to push the boundaries. Yeah. Always. Yeah. कॉलेज से ही मैं एक अनकन्वेंशनल हाँ. स्टूडेंट थी. Yeah. मेरा थीसिस भी बहुत कंट्रोवर्शियल था. एंड माय मदर वाज लाइक, मैं जितनी डरी हुई हूँ, मैं जितनी प्रोटेक्टिव और शेल्टर्ड हूँ, ये मैंने एक ऐसी बेटी पैदा कर दी है who wants to be independent and Yeah. not conform.